Okay, and the lecture is also sent in the group, है ना? Yeah, today's revision class lecture is also there. ठीक है? चलिए. Yes, sir. We have me also. We have Fadil also. Safiya is also here. ठीक है. So in the last lecture, we looked at lanthanoids, and today we'll be doing actinoids. ठीक है? So please write the topic. Actinoids. No. Now in actinoids, how will we start? What's the first topic that we have to study? We have to study the general electronic configuration, है ना? General electronic configuration actinoids का क्या है? Please write. General electronic configuration. The general electronic configuration of actinoid is here. If you look at lanthanides, in lanthanides we were filling the 4F14 subshell, and in actinoids we will be filling the 7S2 will be filled, 5D01, and 5F will be filled. Okay, so the general electronic configuration is going to be 7S2 is going to be common in all of them. 6D will be 0 or 1 sometimes. 6D 0 or 1 sometimes. And we will be filling the 5F 1 to 14. Okay, so 5F subshell is filled in actinides. 5F subshell is filled uh, consecutively. Now, one of the important point regarding these subshell is that all of these subshells, they don't have much of difference in energy. इनमें energy difference ज़्यादा नहीं होता है, and that is why they are what they are having very similar energy states. So you'll write 7s, 6d, and 5f have very similar energies, and the energy difference between them is very low. Energy difference is very low. Next, after general electronic configuration, you will write the ionic sizes. In ionic size, as we had the lanthanide contraction, similarly, we will be also having the actinide contraction. Okay? And that is why the general trends in actinide, it is going to be there will be a gradual decrease in the size of atoms. You will write here gradual decrease in size of M3 positive ions due to actinoid contraction. Due to actinoid contraction. If I compare the lanthanide contraction and the actinide contraction, then the lanthanide contraction is to a lower extent, actinide contraction is to a greater extent. Okay, so you write here the contraction is greater due to
poor shielding of 5F subshell. Poor shielding of 5F subshell. Next is oxidation state. So first of all, we will say that in general जो आपके पास यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट का ग्रेटर रेंज देखा गया है, ठीक है. So as you saw in lanthanides, most of the lanthanides they were having +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ में +2 और कुछ में क्या था +4 था. बट इट्स नॉट द केस. एक्टिनाइड्स में जो कम से कम है दैट इज 3, एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एक्टिनाइड इज +7 ऑल्सो. ठीक है. सो दिस वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज because of the small energy difference between these orbitals. Since these orbitals are not having a high energy difference, it is easier to remove the electrons. If you can remove the electron from 6s, you can also remove 7s. You can also remove from 5s because both of them are having similar type of energies. So you will write here in oxidation state, first of all, greater range of oxidation state is present due to lower energy difference between 7s, 6d and 5f subshell. And when you have lower difference in energy, तो energy यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन सबसे निकाल सकते हैं. You don't have to only remove the electron from 7s, 6d, 5f से भी आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. Now, in general, all of the atoms, all actinoids show +3 oxidation state. सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट थोरियम which shows +4 oxidation state due to stable 5f0 configuration. एक एक्सेप्शन आपके पास यहाँ भी है ना. सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं +3 एक्सेप्ट फॉर थोरियम. थोरियम विच इज शोइंग +4. +4 ही वो शो करता है, +3 शो नहीं करता. वाई? बिकॉज 5f वहां पे 0 है. Now next thing is what else you can write. You can also write ऐसे लिख लीजिए actinides and lanthanides both show most both show +3 oxidation state in most of the compounds. In most of the compounds. चलिए. Now, in general characteristics, so these are also silvery gray in appearance. Next is
वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। अब इसमें जैसे आपको ना रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं दिया है, बट एक रिएक्शन आपको जो दिया है, एंड इट इज रिटन इन टेक्स्ट, व्हेन boiled in water they form oxide and hydrides। ठीक है, एक्टिनियम में क्या क्या बनता है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। नेक्स्ट यू राइट ऑल मेटल्स, है ना, ऑल एक्टिनाइड्स मेटल, है ना, ऑल मेटल्स react with HCl to form H2 gas, but do not react with HNO3। ठीक है, जब HNO3 से react नहीं करते, then why it is not reacting? Because with HNO3 due to formation of protective oxide layer। ठीक है, तो HNO3 से मतलब रिएक्ट करने से पहले दे फॉर्म ऑक्साइड, एंड वंस दे फॉर्म ऑक्साइड, then one layer of oxide is present on the metal, and that is why this oxide is does not this oxide does not react further with HNO3। as soon as they react they first of all make oxide, जो कि क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, है ना। HNO3 it oxidizes, HNO3 is also oxidizing agent, है ना। तो जैसे कि उसने ऑक्सीडाइज किया, what will happen in the metal, there will be a coating of oxide and further reaction HNO3 के साथ नहीं होगा। मूविंग ऑन, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, so if we talk about the magnetic property, then the magnetic property is not very, मतलब the trend is not very gradual, कोई खास ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, it's very complicated, and they have magnetic property, it is because of unpaired electrons in the 5f electrons। ठीक है, so you will write uh, they show paramagnetism due to unpaired 5f electrons। That's it. Now, regarding the behavior of actinides, regarding the behavior of actinides, there is not much data on the actinides, because most of the actinides that we are having, and especially after uranium, these are man-made these are man-made elements, and they have only been made in nanogram amount, and their half life is very low, like uh, they are available for like 10 days से लेके कम से कम 3 hours 10 hours तक का उनका half life होता है। So they are very radioactive and they disintegrate in normal conditions also, that is why greater extent of chemistry is not known for actinides। ठीक है, so you'll write here, since most actinides are highly radioactive and made only in nanogram amounts, only made in nanogram amounts, detailed chemistry is unknown। ठीक है, उनके बारे में we don't know much about them। अगर nanogram amount में है कोई चीज, then obviously you will not be able to do any reactions for them, ना? Reaction ही आप नहीं कर पाएंगे। Now, moving on, now we can do what, we can compare it with what। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने शायद नहीं देखा, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ना। तो बस आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एक चीज लिख लीजिए, यू राइट हियर
ionization enthalpy of actinides is that of lower than that of lanthanides. ठीक है. Ionization enthalpy is lower than that of lanthanides. Now, if they are asking the reason, then the reason is you can write lanthanides due to greater penetration of 4f electrons than 5f electrons. ठीक है. So m+3 की बात हो रही है. That means you have to remove 2 electrons from the s subshell and you have to remove 1 electron from the f subshell. ठीक है. जब हम s की बात कर रहे हैं, then in that case in the lanthanide की अगर हम बात करें तो in lanthanide we are having 6s, actinide में 7s है. f की अगर हम बात करें, here we have 4f, here we have 5f. 7s and 5f, these are far away, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट. यू कैन इजिली सी दैट 6, यानी कि दैट मीन 6 इज व्हाट, नियरर टू द न्यूक्लियस, 7 इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, 4 is nearer to the nucleus, and 5 is away from the nucleus. This is the case for lanthanides. This is the case for actinides. ठीक है. This is the case for actinides. Actinide से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा. That is why their ionization enthalpy is lower. So you'll write due to the greater penetration of 4f electrons than 5f. That's it. Next, you will write when you are going to compare actinides and lanthanides. ठीक है ना. उसके लिए जरा सा अलग से टॉपिक हम लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ actinides and lanthanides. You write here comparison between lanthanides and actinides. Comparison between lanthanides and actinides. Now, when you see the initial lanthanides and initial actinides, they have very similar properties to each other. है ना? And then there is a gradual variation. And because of this similar property, if you have lanthanides and actinides, they are very difficult to separate. ठीक है. तो सबसे पहला बात आप लिखिएगा, early lanthanides and actinoids have similar properties. ठीक है. They have similar properties. Then you will write next. Now, as the atomic number increases, then you will see that there is some gradual variation in the properties, and but still there is no change in the oxidation state. Oxidation state में आपके पास almost सबका +3 रहता है. Then we have lanthanide contraction or actinide contraction. Then the extent of effects in the sizes. और उसकी वजह से क्या होता है, the properties of the elements after one element, इसको हम लिख ही देते हैं एक से, ऐसे लिख लीजिए. If you compare lanthanide contraction and actinide contraction, lanthanide contraction, lanthanide and actinide contraction both have effects on the size and properties of
succeeding elements. Okay, so this is the comparison between actinides, lanthanides, and actinides. Now, there are a few other points इसको ना we can discuss in the terms of questions also. खासतौर पे जो आपके F block के बारे में है, ठीक है? Just give me a second. कुछ हम questions discuss कर लेते हैं. We learned about the hydroxide. चलिए एक पॉइंट ना लैंथेनाइड्स का छूट गया था. Just write a note here. This is regarding the hydroxides of lanthanides. ठीक है, so you'll write basic strength of hydroxides of lanthanide decreases with decreases increase in atomic number. ठीक है, so the point I think that is what is let me write some differences between lanthanide और actinides का. एक बार comparison हो जाएगा, then we can end this chapter. एक साथ ही कर देते हैं इनको. So here you will write regarding lanthanides. Here you will write regarding the actinides. Now this can also act as like a short notes for you guys. ठीक है, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एक्सेप्शंस वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा ना, बिकॉज वी आर जस्ट कंपेयरिंग लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. सो सबसे पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इसमें वी कैन कंपेयर देम. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथेनाइड्स की अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड्स में क्या होता है, यू हैव 6s2 is fixed, then you have 5d 0 to 1, and then you have 4f that is 1 to 14. Actinides में यही चीज क्या होता है, this is 7s2 and then you have 6d 0 to 1, and we have 5f 1 to 14 is being filled. Can I move it a bit like this? Yeah, fine. Next is the oxidation state. ठीक है, तो second oxidation state में mostly क्या होता है, mostly +3 and few case में and few cases of +2 and +4. These are the oxidation state. लेकिन actinides में क्या होगा, +3 तो होता ही है, +3 oxidation state and higher such as higher oxidation state such as +4 is also seen, +5, +6 and +7 is also seen. ठीक है. Now next is binding energies. ठीक है, थर्ड है binding energies. बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें, दैट द पेनिट्रेशन पावर है ना, कि 4f में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, दोस विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 4f electrons are attracted, rather I should write held more tightly, are electrons are held more tightly to nucleus
5f electrons are not held as tightly to nucleus. शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, then the 4f electrons have greater shielding effect, greater shielding effect. Therefore, what will happen? The contraction is less. यहाँ पे इन कंपैरिजन टू 5f दे आर हैविंग ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, है ना? ऐसे तो 4f का भी खराब ही होता है, बट इन कंपैरिजन टू, इवन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट लिखा रहेगा किताब में, कहीं पे पुअर लिखा रहेगा। बट ये ध्यान देखिएगा कि कंपेयर किससे कर रहे हैं। व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद 5f, देन 4f का ज्यादा होता है। इन दिस केस नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर rather have poor shielding effect, therefore the contraction is large। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। देन वी हैव नेक्स्ट, अगर हम बात करें, if we can talk about the कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लैंथेनाइट की टेंडेंसी ना कम होती है, हैव लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द लोअर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंस shielding effect, yeah, SE is shielding effect. In lanthanides, we have only plus 3, plus 2, plus 3, and plus 4 oxidation state. That is why the complex formation tendency is low. Here we have higher tendency to form complexes। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लिखिएगा। एंड फॉर द सेम रीजन, if you talk about the oxo anions, then lanthanide do not form any oxo anions. They don't form, oxo anions। ठीक है, and these they form oxo anions। Again, this can be direct, क्यों बनाते हैं? Because higher variation in oxidation state। If you talk about the radioactivity, then mostly these are non-radioactive। There is only one that is radioactive in lanthanide, that is promethium। You can write it like this: only promethium is radioactive। Ra is radioactive। ठीक है, here in actinides, all the actinides are what? All the actinides are radioactive। All are radioactive। नेक्स्ट लिख लीजिए। If we talk about the basic character, then these are less basic। Lanthanides are less basic, actinides are more basic। नाइन्थ में लास्ट लिख लीजिए। So if we talk about the colors, then these are what? Colorless, because यहाँ पे unpaired electrons नहीं होता है, and plus 3 oxidation state में they will be mostly colorless, and these are mostly colored in the case of actinides। खैर लेकिन कलर का छोड़ दीजिए, आप नहीं लिख ली, less basic, more basic, 8 ऑप्शंस काफी हैं। Raise your hand if you're done।
इसमें एक टॉपिक ना आप अलग से लिख लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द सिमिलैरिटी बिटवीन second and third transition series, right? Similarity between second transition series। ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सा हुआ है? फर्स्ट था 3D। ठीक है। नेक्स्ट ये 4D सीरीज है, 4D सीरीज भी बोलते हैं इसको। एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सा होता है? 5D सीरीज। ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन रिजेम्बलेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें आपके पास इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये हैव टाइटेनियम। टाइटेनियम के नीचे होता है जिरकोनियम, एंड जिरकोनियम के नीचे होता है आपका हैफनियम। ठीक है। So this is in the first transition series, this is second transition series, this is third transition series. Now the similarity between zirconium and hafnium is very much, इतना ज्यादा होता है, and also all of these similarity is because of the similar sizes। इतना ज्यादा साइज में इनका साइज सिमिलर होता है that it is very difficult if zirconium and hafnium are present in a single rock, then it is very difficult to separate them because दोनों के साइजेस क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है। सो जिरकोनियम हॉफनियम आप लोग को याद रखना है, जनरली इसके बारे में सवाल होता है। दीज टू आर हैविंग वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज। यू राइट द साइज ऑफ, द साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, साइज ऑफ, यार, second and third transition series is very similar। ठीक है। therefore therefore second and third transition series resemble each other more than first and second transition series। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जितना, हाँ, यू राइट, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। जिरकोनियम एंड हाफनियम, they will directly ask why zirconium and hafnium they show similar properties, you will directly write because of lanthanide contraction, that's it। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा another consequences, similarity among similarity among lanthanides। ठीक है। you write here due to similar size of lanthanides, similar size of lanthanides, their chemical properties resemble each other, chemical properties resemble each other, therefore it is difficult to separate them in pure state।
है, कर लीजिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ, राइट, as the size of cation decreases, ionic character increases. This is basic Pajan rule. Pajan rule says that as the size of cation decreases, the ionic character it increases. So as we go from lanthanum 3 positive to lutetium 3 positive, that means lanthanide ka starting, lutetium that is the last element of the lanthanide. The size decreases, size the size decreases and the ionic character increases, making it easier to lose OH negative ions. तो जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे ही वैसे क्या होगा, वैसे ही वैसे ही आपके पास OH नेगेटिव के निकलने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। Oh, wait a second. I think I have written ulta. My bad. Sorry, guys. Size of cation. एक second. एक उल्टा लिख दिया हमने. My bad. Ionic character is going to decrease. Size of cation छोटा होगा. Size of anion बड़ा होगा. Yeah, ठीक है. Ionic character is going to decrease. So as we go from lanthanide, ionic character will decrease, making it difficult. लिख दीजिएगा. My bad, guys. Making it difficult to lose the OH negative ions. साइंस में कैसे डिपेंड करता है, सी इफ यू हैव अ बिग पॉजिटिव आयन, बिग पॉजिटिव कटायन एंड बिग पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो पोलराइजेशन इज समथिंग, पोलराइजेशन क्या होता है, you have electrons and the electrons will be attracted. See this electron, it is attracted, all the electrons from here to here all are approximately attracted equally, है ना, सारे के सारे electrons equally attracted towards the cation. But if you have a difference in size ना, आपके पास अगर cation छोटा हो जाता है और anion क्या हो जाता है, बड़ा होता है, ठीक है, when the anion is large, then what's going to happen, this particular cation is going to attract the electrons in a certain direction, इस तरह से attract करेगा, like this. So what will happen, there will be electron density here like this. Now all the electron density will be, so now the anion is distorted. जो anion आपके पहले ऐसे था, is like this, it is now transforming like this. The anion जो है ना इस तरह से distort हो जाता है. So when anion is distorted, you see आपके पास positive charge यहाँ पे and the anion is distorted like this. So you can say that यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. So it is like sharing of electron. So as the size of cation decreases and size of anion increases, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है, वो गलती से हमने इंक्रीज लिख दिया था, प्लीज राइट दिस डाउन. As the size of cation decreases, ionic character decreases. So as we go from lanthanum to lutetium, the size decreases and the ionic character also decreases, making it difficult to lose OH negative ions. And that is why basic character, therefore, basic strength decreases with increase in atomic number. ठीक है, तो नेक्स्ट, अब आपका तो आज क्लास खत्म हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज ओवर. जितना भी सिलेबस था, जो कुछ भी अगर किसी का कुछ बचा हुआ है, देन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम
नेक्स्ट वीक। अदरवाइज आई थिंक डेबोरा एंड फिया फॉर आप दोनों का शायद कंप्लीट हो चुका है ना, राइट? डेबोरा एंड फिया, एवरीथिंग इज Yes, कंप्लीटेड sir. ना? Yes, sir. हम्म, ठीक है। सो बट फादिल एंड यूसुफ, यू गाइस विल बी कंटिन्यूइंग। और फादिल, आपने कहाँ से ज्वाइन किया था? लाइक क्या क्या आपने पढ़ लिया है, जरा बताइएगा। तो आप बीच में एब्सेंट भी करने लगे थे, है ना? सो लेट मी सी। So I think I joined before we started electrochem. अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप आ चुके थे? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है आपने? Yes, sir. Yes, sir. वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा मेरा खराब हो चुका है। 26 जुलाई। हेलो एल्केमिस, Mm. एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सॉर्ट फीचर्स, डेट क्रिएटेड, इसके लिए भी आ जाओ भाई। आई कैन नॉट सॉल्व दिस। नहीं, अल्कोहल, कार्बोनिल, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन इज इन नवंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अक्टूबर, ऊपर आ जाओ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले केमिकल काइनेटिक्स इन जून, इलेक्ट्रॉन सितंबर, कोऑर्डिनेशन इन नवंबर, अमीन्स इन दिसंबर, डीएनएफ ब्लॉक इन दिसंबर। ठीक है। सो यू ज्वाइन फ्रॉम, आप तो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप हैं, है ना? सो यू Yes, डिड द sir. होल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री Yes, sir. एंड केमिकल काइनेटिक्स। I don't remember, sir. I think chemical kinetics as well. नोट्स हैं आपके पास कि नहीं है? No, sir. I think I joined mid chemical kinetics, but I didn't have notes. Then electrochem onwards, I was there in all the chapters. तो सॉल्यूशंस आपने नहीं किया, तो सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग। अच्छा, व्हाट अबाउट हैलो एल्किन हैलोरीन अल्कोहल, मतलब क्या आपका ठीक है नहीं ठीक है, क्या करना है पहले बताइए जरा। Sir, I've done that chapter. I don't remember. It wasn't done in the batch, right, sir? Like after I सॉरी, joined. व्हाट आर यू सेइंग फॉर? So I'm saying haloalkanes was done before electrochem, right? Yeah, you have not done haloalkene with me, I but have. आपने लेक्चर्स वगैरह Separately, I have done it, sir. सेपरेटली, आपने लेक्चर्स वगैरह से किया हुआ है ना, ठीक है। Yes, sir. सॉल्यूशंस Solutions, sir, I didn't do. अच्छे से. यू हैव नो आइडिया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद सॉल्यूशंस, ठीक है ना? Okay. तो ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। यार थोड़ा बहुत टाइम तो है अभी, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। सॉल्यूशंस एंड आई थिंक सॉल्यूशन ही फिर बचा, और तो कोई चैप्टर नहीं? एनी अदर चैप्टर दैट यू वांट टू डू? No, sir. सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स आल्सो ना,